लास्ट जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे दैट वाज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को नोट कर लिया था। ये मेथड है केमिकल बॉन्ड के एतबार से। आज इसके जो रिमेनिंग तीन चार पॉइंट्स है हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग में है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि इसमें क्लियर है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक डी ऑर्बिटल एक एस और दो जो है पी ऑर्बिटल मिक्स अप और इस तरह से these four hybrid orbitals are directed to the corners of the sphere giving the sphere planar structure. The formation of the non-tetrafluoride molecule can be explained on ds2 hybridization. This molecule has square planar geometry as it is shown in the below figure. कि आप इसमें नोट कर रहे हैं कि जीनान जो टेट्राफ्लोराइड है, चार फ्लोरीन एटम इसमें जो इसकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है इसके कॉर्नर पर मौजूद है। तो ये इसकी ज्योमेट्री होगी dsp2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इसकी एग्जांपल क्या आ गई? जीनान टेट्राफ्लोराइड। इसी तरह dsp3 जो है क्लियर है 1d 1s एंड 3p ऑर्बिटल मिक्स अप फॉर 5 dsp3 hybrid orbitals. All the five hybrid orbitals arrange themselves in a trigonal bipyramidal manner. The formation of the sulfide molecule can be explained on dsp3 hybridization. This molecule has trigonal bipyramidal geometry as shown in the figure. तो ये pCl5 जो है इसमें भी आप नोट कर लेंगे फास्फोरस। ये ट्राइंगुलर शेप आ गई इसकी। इसमें दो पिरामिड एक above और एक below आ जाए। Similarly, D2sp3 इसमें क्या होगा? Mixing of 1s, 3p and 2d orbitals on the same atom give 6 D2sp3 hybrid orbitals which arrange themselves in octahedral manner. The formation of SF6 molecule is इसकी आ जाएगी D2sp3 hybridization याद पर होगा। तो ये जैसे स्क्वायर प्लेनर था उसमें दो पिरामिड जैसे बन जाए। स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल भी आप कह सकते हैं। इसी को आप ऑक्टाहेड्रल मैनर कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह देखें कि एक और इसमें जो फॉर्म दैट इज अबाउट इसमें देखें कि ये तो डीएसपी हुआ गया। इसके बाद ये आ गया कि sp3 इसी तरह से ये D2sp3 एक D3 sp3 SF6 है। इसे आप नोट कर लेंगे यहाँ इस तरह से मिसिंग हो गया है। अच्छा, फिर ये देखें कि ये रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के जिन्हें हम पहले नोट तो कर चुके हैं। आप इन्हें रीड कर लेंगे। सिमिलर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिर्फ इसमें हिस्सा लेंगे। नंबर ऑफ hybrid orbitals produced is equal to number of orbitals undergoing hybridization. Most of the hybrid orbitals are similar, but they are not necessarily identical in shape. They differ from one another in their orientation in the space. For equivalent hybrid, the orientation in space is determined by the number of orbital mixed and consequently the number of hybrid orbitals obtained. Uh,
and axes are correct. From the type of hybridization, one can predict the geometry and bond angles of the molecule. Is the main point है. An orbital which has used to build up the hybrid outer is no longer available to hold the electron in pure form. ये फिर एक इसमें देखेंगे एक चार्ट दिया हुआ है इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मिक्सिंग है एटॉमिक आउटर की उससे जो हाइब्रिड बनते हैं और उसकी ओरिएंटेशन ज्योमेट्री कैसे होगी फिर उसकी एग्जांपल आपके सामने ये फिर इस तरह से इसकी लिमिटेशन है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की although promotion and hybridization necessary for formation of the hybrid orbital, the promotion of electron is not necessarily lead to the formation of hybrid orbitals in multiple bonding as some the driving force for hybridization is the energy release due to the bond formation involving hybrid orbitals. The change is tetrahedral because the energy of the molecule in this configuration is the lowest. The carburetum इसकी ground state है after promotion of US electron to the orbital can use the sp3, sp2 or sp hybrid orbitals for bond formation depending upon the number of bonds formed in a particular situation. A set of hybrid orbitals need not be equivalent to a trigonal bipyramidal hybridization gives two axial orbitals perpendicular to the equatorial orbital. Thus, BSIN 5 has two chlorine atoms different from each other. तो बस ये आज का जो है लेक्चर है वेरी मच